Hello, students. Welcome back. In this session, we are going to discuss the practice zones and the checkpoint extra questions. So, the first question is differentiate between autotrophs and heterotrophs. Autotrophs and heterotrophs organisms होते हैं ना कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा डू नॉट गेट कंफ्यूज मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो वो दैट इज heterotropic और autotropic mode of nutrition. So these are the organisms that we are talking. Autotrophs, the organisms that can make their own food using simple substances such as carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll, and they can make their food own, such as green plants. Whereas heterotrophs are those organisms which make their food by consuming other organisms, which cannot make their own food. Next is define the following terms: omnivores, carnivores, and producers. Omnivores are those organisms, वो organisms होते हैं जो plants as well as animals दोनों को ही खा सकते हैं. Carnivores are those organisms which eat only other animals only. They do not eat plants. And the producers वो organisms होते हैं like green plants जो अपना खाना खुद बना के अपने आप को फीड करते हैं. लाइक देर आर सर्टन ग्रीन प्लांट्स, सर्टन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक एल्गी. They manufacture their own food by using simple substances from the surrounding, so that is why they are referred as producers. Next, practice zone 2. How would you represent photosynthesis through a chemical reaction? केमिकल रिएक्शन हमने की थी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स बाहर से लेते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉयल. In the presence of sunlight and chlorophyll, they convert it into glucose, that is carbohydrates plus oxygen. Clear? Next is practice zone 3. What kind of organisms are partial parasites? Partial parasites कौन से होते हैं? Which depend partially on other organisms. Some plants like mistletoe depend partially on other plants despite they are also having chlorophyll, so but they depend on other plants for food and water, for water and other nutrients. But they can prepare their own food because they have chlorophyll, so they are partially dependent on other organisms for the water and other nutrients. So those organisms are known as partially parasites, जो अपना खाना खुद बना भी सकते हैं बट कुछ चीज़ें हैं जो उनको दूसरे प्लांट से लेनी पड़ती है, उनको पार्शली डिपेंड होना पड़ता है ऑन द अदर प्लांट्स. सो दोज आर द पार्शियल पैरासाइट्स. एग्जाम्पल मिसल्टो. नेक्स्ट इज practice zone 4. Which organism help in replenishing the soil? तो नेचुरली रिप्लेनिशमेंट मीन्स न्यूट्रिएंट्स गेन करना सॉइल का. तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स फिर से रिकवर किस बैक्टीरिया, किस ऑर्गेनिज्म से होते हैं? दो वन ऑफ देम इज राइजोबियम. राइजोबियम कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स बिकॉज प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते, दे टेक इट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स. तो वो कंपाउंड्स में कन्वर्ट कौन करता है? दैट इज राइजोबियम. राइजोबियम कहाँ पे होता है प्लांट में? इट इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स. यस. नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर सिम्बायोंट्स? सिम्बायोंट्स इट इज समथिंग रिलेटेड टू द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो ऑर्गेनिज्म जिनमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है, दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज सिम्बायोंट्स. हमने एग्जांपल की थी एल्गा एंड फंगस की. Symbiotic relationship is an interaction between two organisms, different organisms which benefit each other and live together. This process is known as symbiosis, and the organisms involved in symbiosis are known as symbionts. Lichens is association between alga and fungus. तो इसकी एग्जाम्पल सिम्बायोंट्स की इज एल्गा एंड फंगस जो मिलके एक एसोसिएशन बनाते हैं, दैट इज नोन एज लिचन्स. Next is how do saprotrophs help in enrichment of soil? Saprotrophs कौन से organisms है which depend on dead and decaying matter and convert it into simple matter which can be easily taken up by the plants.
So the saprotrophs are organisms that decompose dead and decaying plants matter and convert it to simple matter. They convert nutrients into and replenish द सॉयल मीन्स जो वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिके हो चुके हैं उनको क्या करते हैं, दे कन्वर्ट इट इनटू सिंपल मैटर जो कि इजीली प्लांट्स टेक इन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स. दिस सिंपल मैटर कैन बी ईजिली एब्जॉर्ब्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स. तो जो सिंपल मैटर होती है वो अदर ऑर्गेनिजम्स इजीली उसको ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल सम बैक्टीरियाज आर देयर विच डीकम्पोज. हमने एग्जांपल किसकी की थी, सम बैक्टीरियाज, हमने फंगस की एग्जांपल ली थी, है ना. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द चेक पॉइंट सेक्शन. These are the extra questions that you need to do, and let us start with the first one, that is what is nutrition. Nutrition is a process of taking in food, means वो प्रोसेस जिसमें हम फूड इनटेक करते हैं और जो इनटेक कर लिया है फूड उसको अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, and that is known as nutrition. Next is give two examples of each omnivores, carnivores and producers. Omnivores की दो examples are, one is you can take like dogs, okay, cats, they are omnivores. So like a rat, ant, mice, duck, these all are insect eating organisms, so these are categorized under omnivores. Carnivores are those flesh eating animals which eat only other animals like lion, tiger, eagle, fish. So fish, there are some fishes which feed on the wheat flour also. So not exactly fish, you can say you can write whale instead of this. Producers are the green plants which can make their own food, green plant, and there are some bacteria also, and also the microscopic algae is there, you can write. There are many examples. Next question, what are the different types of heterotropic nutrition found in plants? So there are basically three heterotropic nutrition in plants. We are talking about plants. So first is parasitic nutrition, जिसमें plants depend on other plants for their nutrition. Saprotropic, the plants जिसमें जो plants हैं वो dead and decaying matter से अपने nutrients लेते हैं. Symbiotic में जिसमें दो organisms एक दूसरे की help करके grow करते हैं, that is the symbiotic relationship. Next is what are the saprophytic organisms. Saprophytic organisms are those organisms that derive their nutrients from dead and decaying plants, and those organisms are known as saprotrophs. Okay. Next is what is the role of saprophytes in the soil replenishment. Soil replenishment में क्या रोल होता है, that is they convert the complex matter into simple matter which can be easily taken by the plants in gaining the nutrients. ठीक है. Saprophytes release various useful substances that includes plant nutrients in it. These nutrients support the growth of the plants. Nutrients are released back into the soil which are taken up by the plants. Clear? Next is with the reference to the photosynthesis, answer the following questions. Photosynthesis से related questions हैं ये. What role does the arrangement of leaves play in the photosynthesis? तो जो leaves होते हैं, they are arranged in such a manner that they can trap the sunlight and reach the inner layer where the process of photosynthesis take place. Leaves में different parts होते हैं which form the layers and they trap the sunlight easily. What happens to the food synthesized in the photosynthesis? जो food बनता है उसको क्या होता है? They are saying the food synthesized in the photosynthesis is in the form of sugar or glucose which provides energy to the plant. It is transported to the various parts by the network of tubes known as phloem. Next is what are the basic requirements for the photosynthesis? They are the carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight. So these are the basic
requirements which after जिनके बिना there will be no photosynthesis taking place. Next is it necessary that leaves containing chlorophyll will always have green color? जरूरी तो नहीं होता है that there will be green color every time. तो समटाइम्स व्हाट इज देयर दैट समटाइम्स क्या होता है, जो अलग अलग कलर्स के लीव्स होते हैं, लाइक येलो कलर का लीव है या फिर ब्राउनिश कलर का है, तो इट मास्क्स द ग्रीन कलर, मीन्स उसके ऊपर एक लेयर होती है उस कलर की. तो ज़रूरी नहीं है कि अगर ग्रीन कलर का लीव नहीं है तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होगी, हो सकती है, बट हो सकता है कि उसके ऊपर लेयर हो किसी अदर प्लांट की. क्लियर. और या फिर कई बार क्या होता है बेटा, देयर इज लार्ज नंबर ऑफ अदर कलर बट सम अमाउंट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती ही होती है. नेक्स्ट इज व्हाट इम्पोर्टेंस डज द फोटोसिंथेसिस होल्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो what will be there? There will be no oxygen left because plants are converting carbon dioxide into oxygen. तो टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा हमारा अर्थ का, बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाएगी जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो सन रेज आती हैं उसकी जो हीट है उसको ट्रैप कर लेती है. क्लियर. तो उससे क्या हो जाएगा, देयर विल बी नो सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ. Also we will not get food, whole of the food chain will get disturbed and we will not survive. Next is what is a partially heterotropic nutrition. Partially heterotropic nutrition is a mode of nutrition in which plants can prepare their food but depend on insects for fulfilling their nutrients. Means कुछ ऐसे जो this is the heterotropic partially heterotropic nutrition, जिसमें क्या है दैट जो प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं पर उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो अदर इंसेक्ट से ही मिलते हैं. लाइक कुछ जैसे हमने एग्जांपल की थी पिक्चर प्लांट की, जो जिसको नाइट्रोजन मिलती है बाय ईटिंग द अदर ऑर्गेनिजम्स. सो दिस इज अ पार्शली heterotropic nutrition. Next is how does the modification in pitcher plant help to capture its prey. Modification pitcher plant की हमने स्ट्रक्चर देखा था that there is a one lid over the surface. अंदर से वो जो सरफेस होता है वैक्सी होता है जिससे स्लिप कर जाते हैं इंसेक्ट्स, एंड जो वो पिक्चर होता है उसका इट इज़ फिल्ड विद द डाइजेस्टिव जूसेस विच इजीली डाइजेस्ट द ऑर्गेनिजम्स. एंड उसके हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं विच आर प्रोजेक्टिंग डाउनवर्ड्स, जो इंसेक्ट्स को ईज़िली जो डाइजेस्टिव जूस है उसमें स्लिप करवा देते हैं, एंड द इंसेक्ट गेट्स ट्रैप्ड इन दोज हेयर्स ऑल्सो. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स विच लिव टुगेदर बाय हेल्पिंग ईच अदर. जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए लिया था लिचन्स. लिचन्स क्या होता है, इट इज़ द एसोसिएशन विच इज़ मेड बाय द फंगस एंड द एल्गा. एल्गा कैन मेक इट्स ओन food whereas the fungus have water and shelter for the fungus, so they help each other. Describe the symbiotic relationship in lichens. This we have discussed just now that जो lichens होती हैं they are made up of association between alga and fungus. Alga remains alga prepares food whereas fungus absorb water and minerals. तो ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं. alga gives some food to the fungus to live and whereas जो fungus है it provides the environment shelter to the alga, also water to the alga to survive, so they both benefit each other. Next is differentiate between the following. First is heterotropic nutrition and the saprophytic nutrition. तो the heterotropic nutrition में क्या होता है that the heterotropic न्यूट्रिशन पाया जाता है इन द हीटोट्रॉप्स, वेराज जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है इट इज़ प्रेजेंट इन द सैप्रोट्रॉप्स. दे डिपेंड, जो हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स
for their nutrition, whereas जो saprotrophs होते हैं they depend on dead and decaying animals and plants. And the examples are non-green plants in case of heterotrophic nutrition, whereas जो saprophytic nutrition है उसमें examples are bacteria and fungus. Next is total parasitic nutrition and the partial parasitic nutrition. Totally parasitic means with the plants which depend on totally on other organisms, and the partially means which partially depend on other, they can make their own food, but for some other nutrients they depend on other organisms. So the total parasitic nutrition, the organisms cannot prepare their own food and depend totally on the host for their nutrients, whereas in the partial they can prepare their own food but depend on the other for food and other nutrients. Example की थी Cuscuta की in the case of total parasites, and whereas in the case of partial parasitic nutrition, the example is mistletoe. Also students, the जो total parasites होते हैं they do not have any chlorophyll, whereas जो partial parasites होते हैं like mistletoe है उसमें chlorophyll होता है and it can make its own food also. Next is, why is it necessary to replenish the soil? Replenishment क्यों जरूरी है soil की nutrients से? As we know that जो plants होते हैं वो nutrients लेते रहते हैं, तो this results in reduction of nutrients. तो जिससे क्या होता है, plants nutrients ले लेंगे तो उसमें nutrients की कमी हो जाएगी soil में, तो that recovery is necessary so that जो आगे जो plants हैं उनको nutrients मिलते रहें. Next is, why are the leaves called food factories? Because leaves ही ऐसा part है plants का which can use carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, which can convert it into glucose. Plants produce their own food from carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll. H2O is the chemical formula of water. A green color pigment which absorbs the light found in chloroplast present in the leaves to yield food and oxygen. So this happens only in the leaves, so that is why leaves are called as the food factories of the plant. Next is, why are the fertilizers and the manures added to the soil? Why are they necessary? Fertilizers and manures क्यों add करते हैं हम? Just because to add nutrients to the soil. It is also an artificial method, we can say, of soil replenishment. They contain essential plant nutrients to meet the nutritional requirement of the plants. Clear? So this is it. So the discussion part of this chapter. If you are having any doubt, you can ask me. So thank you for watching.